Hi everyone, how are you? This is Rana Sir. Welcome to our Rana Sir educational channel. Today I will talk on a topic whose name is motion in a straight line. In this chapter, this is the chapter number 2 of class 11th physics. This is valid for both type of students who are reading in English medium and also who are reading in Hindi medium. First of all, I will explain each and every terms in English and then I will translate it into in Hindi. Okay, student. So you concentrate on this topic because in this chapter I will explain one concept here equation of motion I will prove with the help of integration method, and integration method is also available in class 12th mathematics. The book is calculus. In calculus book some part is function, then relation, and also limit, differentiation, integration, and also differential equations are also available in calculus book, and that book student will read in class 10, 12th in mathematics. Okay, so concept of integration here I will explain in detail, and then I will use the concept of integration method here in detail for solving for proving the equation of motion. I know there are three types of equation of motion. First is V is equal to U plus AT. Second is S is equal to UT plus half AT square. Here I will explain third equation also, that will be V square is equal to U square plus 2AS. So all these three equations I will prove with the help of integration method. Now here the concept of integration is also explained in Hindi, that is Samakalan. First of all, I will explain all these three equations. I will prove in English medium and then I will translate all these information in Hindi also. Okay, student. So you concentrate on this topic from starting to end for getting these good knowledge, and that will enhance your life. Okay, here one information I am also going to say already. These three equations of motion I have already discussed with you, that is I have proved in previous classes in another way, that is I have used another method for proving these three equation of motions. Now here I will use another way, that is another method to prove the equation of motions in integration method, yeah, by integration method. So you concentrate here and I will explain the concept of integration in detail. Okay, and those concept I will use in proving the equation of motion. Okay, student. So if you like, if you are understanding very well, so you like this live video and also you share this live video with your colleagues, friends, and students, so that they can also improve their knowledge on this topic. And simultaneously you also subscribe this educational channel more and more for getting each and every concepts of physics which are available in the class 11th and also class 9th. So here
concept of physics you will understand in very detail. Okay student, now positively I am going to start it. Now here I have written the class 11 physics. It is also based on NCERT pattern, that is in CBSE board, because students who are reading in English medium, those students can also understand these informations in English. And students who are reading in Hindi medium, that is in UP board, those students can also understand, because after explaining in English and then I will translate all those informations in Hindi. So both students can understand very easily. That is, students who are reading in English medium or in Hindi medium, both students can have easy way to understand. Okay, student, if you are understand this information, so you like this live video and also you subscribe this live video with your colleagues, friend and student, so that they can also update, that is develop their knowledge of this topic. Okay, so here I have written information derivation of equations of motion for uniformly accelerated motion using integration method. So this integration method I will use properly to prove, yeah, derive the equation of motion. Here I have written equations of motion. I will explain all these informations in detail. Okay student, so you concentrate here. First of all, here I will write solution, and then I will write information, that is the first equation of motion. First equation of motion. First equation of motion. I will explain this equation in detail, okay, by using the concept of integration method. So here I am going to say each and every students are knowing the definition of acceleration. So what is the definition of acceleration? Here I will explain in detail the change in velocity per unit time, that is known as acceleration. So acceleration is written with small a, and it will be as change in velocity per unit time. So here I will write like this, delta v divided by delta t. Now here I am saying if any curve which is available like this, and this curve I will say this is along t axis and this will be along v axis. T represents time and v also represents velocity. So if any curve is going like this, so at any point I will consider that will be at x is equal to 0, at x is equal to 0. So at x is equal to 0, so I will consider here left hand limit, and also I will find right hand limit. If I will get the value of left hand limit and also the value of right hand limit, both limit will be equal, so I will say I have to get the limit value at x is equal to a. So similarly I will write here limit. Here I will write limit delta t tends to 0. It means that if I will take the limit value of this information, so I will get left limit value of this information, so I will get a definite value, and again I will get the limit value, right hand limit value, so that will value will also be same, that is definite value. So I will say direct limit delta t tends to 0, delta v divided by t. One information I am also going to say, this is the delta, it is also equal to
b, because delta is the difference. Here delta is the difference between velocities. One velocity is initial velocity and one velocity will be final velocity, because any object which is moving from a point to another point, so in that object will have initial velocity u and final velocity will be v. So I can write acceleration which is equal to final velocity minus initial velocity divided by t. So that will have a time duration t. But here I am going to say I am taking a small distance. That object is moving from point A to B, from point A to B, but here I am taking a small distance, so time will be also small. So change in velocity, that is v minus u divided by t. When I will take left limit value and right hand limit value, both value will be same and both value will be finite. So in this way I can write limit delta t tends to 0, which is equal to delta v divided by delta t. Okay, one information I am also going to say you, delta is also known as difference. So difference has DIFFERENCE. This is the difference, and it is starting with D. Therefore, I am writing here D. So delta is equal to small d. So here I can write that difference will be dV divided by dt. In the place of delta I have to write d. Okay student, so you are knowing very well. If you will have any confusion, so you ask your confusion in the comment section positively. I will see your comment and then I will reply the answer of your question in detail positively. Okay student, so all these informations I have written. Again I will write here, implies that a, here A is available now equal to dV divided by dt. This information I have to write here positively. Now here I will write at the place A divided by 1. There will no change in my solution. Okay, now here one concept I am going to use. Here dt is multiplied with a and this one is multiplied with dv, because I will say this is known as the cross multiplication. So this information each and every student has to know properly. So here I am going to write a into dt. Here I write a into dt, which is equal to 1 into dv. 1 into dv I will write, because here I have done cross multiplication. After doing cross multiplication, I have simplified here. After simplifying, I have got this expression. Okay, student. So before erasing, I will translate all information in Hindi. So each and every student who are reading in Hindi medium, that is in UP board, those students can understand easily. So यहाँ पे क्लास 11 का फिजिक्स है। यह बेस्ड है, ये आधारित है एनसीईआरटी पैटर्न पर। दैट इज स्टूडेंट जो होता है सीबीएसई बोर्ड में जो पढ़ते हैं वो इंग्लिश बोर्ड होता है, उसके सभी स्टूडेंट इजीली इसको समझ सकते हैं। ओके, जो स्टूडेंट यूपी बोर्ड में भी पढ़ रहे हैं तो सीबीएसई का बुक पढ़ रहे हैं और उसमें ये सारे कंसेप्ट जो होता है अवेलेबल है, और इसको किस तरीके से एक्सप्लेन किया जाएगा हम हर स्टेप को वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पर लिखा गया है डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन। जो गति, मोशन का मतलब होता है गति अपने का, गति के समीकरण का डेरिवेशन करना, प्रूव करना है। फॉर यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन, वो जो होता है एक समान गति से मूव कर रहा है यूजिंग इंटीग्रेशन मेथड। इंटीग्रेशन का हिंदी होता है समाकलन।
समाकलन। इंटीग्रेशन का हिंदी होता है समाकलन। समाकलन मेथड, मेथड का मीनिंग होता है विधि। समाकलन विधि से जो होता है गत के समीकरण को प्रूव करना है। गत के 3 समीकरण होते हैं, v बराबर u प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये 3 समीकरण है। ये तीनों समीकरणों को इंटीग्रेशन मेथड से प्रूव करना है। इंटीग्रेशन का मीनिंग यह होता है समाकलन विधि से जो होता है उसको प्रूव करना है। तो यहाँ पर हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कहें गत का पहला समीकरण है। गत के पहले समीकरण को प्रूव करने के लिए हम जानते हैं ये जो होता है त्वरण होता है। त्वरण का परिभाषा होता है वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, या किसी भी वस्तु में जो वेग परिवर्तन होता है पर यूनिट टाइम, मैंने समय अंतराल को, जिस समय अंतराल में उसका वेग में परिवर्तन होता है उसी को त्वरण कहते हैं, या वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वह ए इज इक्वल टू डेल्टा वी बटे डेल्टा टी होता है। एक निश्चित डिस्टेंस के लिए होता है, लेकिन उसमें से सपोज कीजिए अगर वेग में परिवर्तन ए से बी के बीच में हो रहा है, लेकिन हम छोटे डिस्टेंस को कंसीडर करते हैं, तो डेल्टा टी माइनस डेल्टा टी, ये डेल्टा रिप्रेजेंट करता है स्मॉल क्वांटिटी को, और इसका लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, दोनों का वैल्यू सेम होता है, इसलिए इसका लिमिट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे टी डेल्टा टी इज इक्वल टू 0 पर। इस टोटल क्वांटिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर डेल्टा को हम पढ़ते हैं डिफरेंस। डिफरेंस का मीनिंग होता है अंतर। इसमें डिफरेंस में डी से स्टार्ट होता है, इसलिए डी के इक्विवेलेंट हम इसको मानते हैं, इसलिए डी की जगह डेल्टा की जगह पर डी यूज किए हैं। उसके बाद से एक्सीलरेशन ए इज इक्वल टू डी वी बटे डी टी हुआ। अब नेक्स्ट प्रोसीजर यह है कि जो ए को ए बटे 1 ले सकते हैं और यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। पीरियड हिंदी में हम पीरियड गुणक के नाम से जानते हैं। इसका गुणा इसके साथ और इसका गुणा इसके साथ करेंगे। करने के बाद से हम इस एक्सप्रेशन को फाइंड आउट करेंगे, पाएंगे। ओके, और इसके बाद से हम इसको समाकलन विधि को अपनाएंगे। उस समाकलन विधि से जो होता है हम इसको, इसके वैल्यू को, जो फर्स्ट समीकरण होता है मोशन गति का जो पहला समीकरण होता है उसको हम प्रूव करेंगे। ओके स्टूडेंट, हम इसको एक्सप्लेन किए हैं। इस इंफॉर्मेशन में जो भी पॉइंट आपको समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने कलीग्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ और विद्यार्थियों के साथ, ताकि उनका भी नॉलेज इस पॉइंट को अपडेट और डेवलप हो सके। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर भी करें और सब्सक्राइब करें, ताकि क्लास 11 के जितने भी जिसमें कंसेप्ट हैं सभी कंसेप्ट को डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, ताकि उससे कंसेप्ट के साथ साथ जितने भी न्यूमेरिकल होंगे आप इजीली बना सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो पॉजिटिवली जो होता है इसको एक्सप्लेन किया हूँ, इसको इरेज करेंगे। इरेज करने के बाद से फर्दर कैलकुलेशन करेंगे। इसको पहले इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, उसके बाद से हिंदी में आल्सो एक्सप्लेन करेंगे। ओके स्टूडेंट, सो आई एम फीलिंग you are understanding very well. So first of all, above information which is not needed, therefore which is not needed now, therefore I will erase those informations, and after erasing I will solve below information for reaching to the destination. Okay student, so you look it positively, and also you write all those informations on your notebook positively for revising it later. Okay, so here I will say I will use the concept of Samakalan method, and then that is integration method, and then I will prove it. Okay, I will say this is the equation number 1, and I will write here one statement, and that statement will be important because here that statement I write integration method. So I will put here when
t is equal to 0, when t is equal to 0, so initial velocity will be u. Initial velocity, initial velocity will be initial velocity will be u, and I will say when time is equal to t, then I will say final velocity will be, I will write, then final velocity will be v. Okay, so this information I will write when t is equal to 0, so initial velocity will be u. So initial velocity is represented with u, and final velocity when time will be t, so final velocity I will say that will be v. So this information you have to know properly. Okay, now then I will say up integrating equation number 1 on both sides. Integrating equation number 1 on both sides. Both sides we get. Integrating equation number 1 on both sides we get. So here I will put integration sign. I will put integration sign a into dt, which is equal to, I will put 1 into dv, because this symbol is used as integration. Integration in Hindi it is also called samakalan. Integration. So this symbol I say this is the symbol of integration, and its Hindi will be samakalan. Okay student, so I have written one statement, and that statement is important. You have to concentrate on here, and also you have to take its meaning of each and every word, because each and every word has proper meaning, and when you will read and you will imagine, then you will get its meaning, and that meaning I have applied here. When t is equal to 0, in this case the object will be at rest. When object will be at rest, so initial velocity will be 0, and in this case I will say that initial velocity is represented with u. But when time will be equal to t, so in this case final velocity will be v. So the given equation I have integrated on both sides, but here I have to put limit value, because here variable is available in t, so time will start from 0. If any object which is moving from initial velocity, so that object will have time 0, but that object will move up to t, because initial time is 0 and final time is t. So 0 to t I have to integrate first term which are available in left hand side, and in right hand side that function is available in form of v. So v is the v that is available in velocity. So initial velocity, here I will write initial velocity, I have written here u. So initial velocity will be u, and final velocity I will say v. So I integrate from u to v. Okay student, so this is the information, and you have to know it properly. Okay, so here I will erase it, and after erasing I will explain one concept. That concept is important and you have to remember here, because
if any constant which is available. So suppose that constant is 5, but I have integrated with t. So here when I will integrate, so here variable is available in the form of t and 5 is constant. So integration is saying constant term you have to take common. So you have to take outside of integration sign. So I can write like this. I can write like this. 5 can be written 5 into 1 into dt. So here the information I am going to explain here in detail. Integration of 5 into dt. 5 can be written as 5 into t. 5 into 1. Now 5 is constant, so I will take it outside of integration sign. So I can write 5 integration of 1 is equal to 1 into dt is available, so I will put it here dt. So this symbol is the information of integration I have already written here. Now here one information I am going to say, because this is the function which is available in the variable t. So is in integration will be integration of 1 will be here 5 is common, so I will put here 5, but integration of 1 into dt, that will be t, because that function has variable t, so its integration will be t. Integration of 1 will be t, but 1 times if I will integrate, so one constant will also I will have there. It means that 5 can be arranged like this. 5 into 1, 5 is constant, so I will take it out, but 1 into dt, because here function is available in the form of t, so its integration of 1 will be t. So other constant, that is constant term, here I will write c. So integration of this term will be like this, t plus c, and 5 is constant that is available in outside. Okay, so that concept I will use here. So here I will use both concept, and those concept I will use here, and after using I will write, because here you see here a into dt, because this function is available in the form of in the variable t, but here a is available, it means that a will be constant. So imply that here I can write, I will integrate this function from 0 to t. So here I will put 0 and here I will put t, but a can be arranged like this, a into 1. If I will multiply a into 1 into dt, so this term will be same this term, because a is common, so I will take it outside. Similarly here 1 into dv, this term is available in the variable v, so its integration will be v plus c, but here its limit is from u to v. So here I will write u and here I will write v. One additional information I am going to explain with you. Here u is the lower limit and v will be the upper limit. So here I am writing, and you have to know it positively. Upper lower limit, and this will be upper limit. Okay, so here I will say u is the lower limit and v is the upper limit. So here I have written in detail, and in this term, and here I am integrating a into dt. So here a is the constant, so a can be arranged like a into 1, so 1a will be outside. So I will integrate 1 of dt, that will be t plus c, but its uh, domain is from 0 to t. So after using this concept, and then I will also integrate this term. Okay, now first of all, after erasing, before erasing
first of all, I am also going to translate these informations in Hindi. So students who are reading in Hindi medium, that is in UP board, those students can also understand easily. यहाँ पर कहा गया है कि जब t का मान 0 होता है तो इस केस में इनिशियल वेलोसिटी का मीनिंग होता है प्रारंभिक वेग। प्रारंभिक वेग को u से रिप्रेजेंट करते हैं, u से दर्शाते हैं। लेकिन जब t का मान समय का मान t हो जाता है उस केस में फाइनल वेलोसिटी का मतलब अंतिम वेग जो होता है वो भी हो जाता है। तो हम कहेंगे जब भी हो जाता है तो उसके बाद से हम इंटीग्रेट कर रहे हैं। इंटीग्रेट का मतलब समाकलन कर रहे हैं। इक्वेशन नंबर 1 जो हम प्रीवियस इंफॉर्मेशन में एक्सप्लेन किए थे वो इक्वेशन नंबर 1 को हम इंटीग्रेट करते हैं, क्योंकि यहाँ पर दो साइड्स हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड एक राइट हैंड साइड। उसके बाद से हम पाते हैं इंटीग्रेशन साइन का सिंबल यह होता है, संकेत यह होता है, इंटीग्रेशन का हिंदी समाकलन होता है। ओके, तो इसको इंटीग्रेट किए हैं। जब समय 0 होता है, 0 से t होता है, तो 0 से t के बीच में हम इसको समाकलन कर रहे हैं। यहाँ पर कांस्टेंट ये है और यहाँ पर जो फलन है, फंक्शन को हिंदी में फलन के नाम से जानते हैं। तो इस फलन को t के रिस्पेक्ट में है, तो यहाँ पर जो होता है ये कांस्टेंट है, इसको बाहर लेंगे और 1 इंटू dt को जब समाकलन करेंगे तो t प्लस c आएगा, जो ऑलरेडी यहाँ पर एक्सप्लेन कर चुके हैं। अगर कोई भी किसी भी इंटू dt को अगर इंटीग्रेट करना है तो एक कांस्टेंट टर्म होता है। कांस्टेंट टर्म का मतलब अचर टर्म होता है जो कभी बदलता नहीं है। उसको हम 5 को 5 इंटू 1 करेंगे, 5 को बाहर ले लेंगे, 1 इंटू dt होगा। क्योंकि यहाँ पर जो फलन है t के रिस्पेक्ट में है, जब 1 का जब इंटीग्रेशन करते हैं तो यहाँ पर t है तो 1 का t हो जाता है। और जितने बार हम इंटीग्रेट करते हैं, पहले बार इंटीग्रेट करते हैं वहाँ पे एक कांस्टेंट c को ऐड करते हैं। क्योंकि 5 जो होता ऑलरेडी बाहर में है, उसको बाहर में रख कर इसको इंटीग्रेट किए हैं, इसको मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। ओके, तो उसी तरीके से उसी कंसेप्ट को हम कहेंगे। यहाँ पर a है, ये जो होता है कांस्टेंट टर्म है, इस कांस्टेंट टर्म को a को a इंटू 1 के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं। और यहाँ पर ये जो होता है कांस्टेंट है, अगले स्टेप में इसको बाहर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर 5 इंटू 1 है, 5 कांस्टेंट है, इसको बाहर लिए, उसके बाद से इंटीग्रेट किए, समाकलन किए, उसी तरीके से इसको भी समाकलन करेंगे। यहाँ पर अचर कांस्टेंट 1 है, दैट इज कांस्टेंट 1 है, 1 का इंटीग्रेशन समाकलन हम कर रहे हैं v के रिस्पेक्ट में v प्लस सी हो जाएगा। यहाँ पर जो वेरिएबल रहेगा उसी वेरिएबल को यहाँ पर यूज करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, दर्शाएंगे। ओके, यहाँ पर t है तो t के रूप में लिखेंगे। ओके स्टूडेंट, आई होप दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग वेरी वेल। सो यू लाइक दिस लाइव वीडियो एंड ऑल्सो यू शेयर this live video with your colleagues, friends and students, so that they can also improve their knowledge, means update and develop their knowledge on this topic positively. Okay student, further above informations which is not necessary now, I am going to erase, and after erasing I will solve the value information for reaching to the destination. Okay student, so positively I am erasing it. Okay, so here a is constant, so if I will write imply that a I will take out, so integration that will be from 0 to t, 0 to t, and a is outside, so here will be 1 into dt, and on the right hand side I have to write there v plus c, but its lower limit is u and upper limit is v. Now again I will use this concept for getting its value. So a is constant, so it will be outside, so integration of 1 with respect to t, so it will be t plus c, but its lower value is 0
and its upper value will be t. Again here I will put upper value, that will be v plus c, because in the place of v we have to put v. Now I will put it in bracket, but here I will use minus sign itself, and then again and then I will put the value of u, that is lower limit, that in the place of u I have v, I have to put u. So u plus c, that will be okay. Further I will simplify above data also. I can write a, and in the place of t I will write t plus c. This is the upper limit, but here I will put minus sign itself, and then I will put lower value in the place of t, that will be 0 plus c. Okay, I will write in big bracket. Now here minus sign I will use in the bracket, and after using I will find v plus c, and this is minus, this is plus, so it will be minus, and then this is plus and minus, so I will get minus c. Okay, so after simplifying I will say this is plus and this is minus, and both will cancel out. Similarly here I will simplify a in the bracket. After simplify t plus c minus 0 minus c. Okay, so here c and c will be cancelled out. So on the right hand side I will find v minus u, but in the left hand side a into t will be available. So I can write here implies that a into t, which is equal to v minus u. This is the information. Okay, so these informations I will also explain in Hindi, so each and every students who are reading in Hindi medium, those students can understand very easily. यहाँ पर हम वन का इंटीग्रेशन का समाकलन किए हैं टी के रिस्पेक्ट में, तो टी प्लस सी हो गया, जो यहाँ पर ऑलरेडी हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। ओके, ये जो था कांस्टेंट है बाहर बाहर रखे हैं, उसके बाद से हम अपर लिमिट का वैल्यू रखते हैं टी, जहाँ जहाँ टी है वहाँ पर टी रखेंगे, टी प्लस सी हो जाएगा। उसके बाद से यहाँ पर माइनस साइन अपने से रखते हैं, इसको हमेशा आपको याद करके रखना है। माइनस साइन करेंगे और ब्रैकेट में लोअर लिमिट रखेंगे, टी की जगह पर 0 और सी की जगह पर सी। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे सी कट जाएगा, यहाँ पर टी सिर्फ बचेगा, इसलिए ए इंटू टी ऑलरेडी यहाँ पर लिखेंगे। सिमिलरली हम राइट हैंड साइड के डेटा को एक्सप्लेन करेंगे। जब हम इंटीग्रेट किए, समाकलन करने के बाद से पाए हैं वी प्लस सी, यहाँ पर अपर लिमिट रखेंगे, वी की जगह पर वी प्लस सी होगा, यहाँ पर माइनस साइन अपने से रखते हैं और ब्रैकेट में यू, वी की जगह पे यू और सी की जगह पर सी रखेंगे। इसको सिंप्लीफाई किए, इस ब्रैकेट को तोड़े हैं, माइनस साइन को अंदर मल्टीप्लाई किए हैं, तो ये इंफॉर्मेशन मिला है। यहाँ पर प्लस सी और माइनस सी कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल होने के बाद से राइट हैंड साइड में वी माइनस यू आपको ऑप्शन हुआ है। ओके स्टूडेंट, अब हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे कि इस टर्म को हम लेफ्ट हैंड साइड के डेटा करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड का डेटा है, और इधर वाला जो होता है हम कहेंगे राइट हैंड साइड का डेटा। राइट हैंड साइड, these are the left hand side data and these are, and those will be the right hand side data. Okay, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का डेटा है, टोटली राइट हैंड साइड के लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे और टोटली लेफ्ट हैंड साइड के डेटा को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, तो हमारे सॉल्यूशन में किसी तरह का चेंज नहीं होता है। ओके स्टूडेंट, आई होप दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग दी इंफॉर्मेशन इन डिटेल। ओके, फर्दर आई विल erase above data and then I will simplify the value information for reaching to the destination. Okay student, so you concentrate on this topic for understanding each and every information in detail. So first of all, here I have written a into t, which is equal to v minus u. Now this is the right hand side data, already I have written it down, and this is the left hand side data I have already written, but all data which are available in the right hand side I will put in left hand side,
and all data which are available in the left hand side I will put in right hand side, so there will be no change in my solution. Okay, so I can write like this. Okay, if any particular data which is going from left to right and right to left, so its sign will change. So if the left hand side data will have negative, so it will go in right hand side, so it will have positive sign. So I will put here v which is equal to u plus at. So this is the first equation of motion. For this is minus sign, it will go in right hand side, it will have plus sign, v is equal to u plus at. So I will say this is the first equation of motion. This is the first equation of motion. This is the first equation of motion. Okay, so these informations I am also going to translate in Hindi. Okay, तो हमने यहाँ तक प्रूव किया था कि a इज इक्वल टू वी माइनस यू। तो जो राइट हैंड साइड का डाटा है, जो दाएं पक्ष का डाटा है, उस डाटा को लेफ्ट हैंड साइड में रखें और लेफ्ट हैंड साइड के सारा डाटा को राइट हैंड साइड में करेंगे तो इसमें कोई चेंज हमारे सॉल्यूशन में नहीं होगा। तो इस तरीके से करने के बाद से अगर किसी पार्टिकुलर टर्म को जो होता है लेफ्ट से राइट ले जाएंगे, राइट से लेफ्ट लाएंगे तो उसका जो साइन होगा वो साइन क्या होगा, चिन्ह क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड में यू जो होता है माइनस साइन रखता है, अगर ये राइट हैंड साइड में चला जाएगा तो ये प्लस साइन हो जाएगा। इस तरीके से हम कर सकते हैं v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये गति का पहला समीकरण है। ओके स्टूडेंट, सो आई होप दैट you are knowing very well to prove the concept of first equation of motion by using the concept of integration method, जिसको समाकलन विधि कहते हैं। तो इस समाकलन विधि से आप कोई भी इक्वेशन को इजीली प्रूव कर सकते हैं। अगर कोई भी इक्वेशन अगर दिया गया है किसी फंक्शन के फॉर्म में, तो उस फंक्शन के फॉर्म में एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो वह वैल्यू जो होता है वेग का फंक्शन बनता है, और किसी पॉइंट पर जो होता है हम उसका वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। किसी पॉइंट पर जो होता है उस वेरिएबल का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, वह एक्चुअल वेलोसिटी हो जाएगा। ओके, सो वेलोसिटी को हम हिंदी में वेग के नाम से जानते हैं। आई होप दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस कंसेप्ट in very detail. If you have any doubt, so write your doubt positively in the comment section, and then I will look your comment and positively I will give the solution of your comment in detail. Okay student, and if you are understanding very well, so you like this live video and also you subscribe this channel, that is channel name is RANA SIR UP KUSHINAGAR, and also you share this live video with your colleagues, friends and students, so that they can also improve, that is update and develop their knowledge on this topic. Okay student, so positively I am going to erase this first equation of motion, and then I will also start to prove second equation of motion in detail also by using the concept of integration method. Okay student, so you concentrate on this free online coaching classes, and you also take its advantage. If any student who left the uh, physics classes, so those students properly and positively go in my online video section, and you go in playlist section, and also you read all information I have already arranged and saved there. So you positively read from there, and if you will have any confusion, so you write your confusion in the comment section, and then positively I will give the answer of your question in detail. And in the playlist there is also available class 12th mathematics, class 12th physics, class 11th physics, class 10th and
12th physics, mathematics, all are available there in detail. Concept and solutions I have already explained there in detail. Okay, now second equation of motion I will explain here positively. So you concentrate here for learning its solution. First of all, I will write here solution. So next topic is the second equation of motion. The second equation of motion. I will prove it with the help of integration method. Each and every students are knowing uh, velocity which is equal to displacement divided by time. Displacement divided by time. Yeah, change in displacement divided by change in time. I will take its limit value. I will take its limit value delta t which is equal to 0. Velocity which is equal to change in displacement divided by change in time. It is also written as ds divided by dt because d is the shortest change in distance, because if any object which is moving from point A to point B, so I will take a small distance, so that small distance I will write with ds and small time will be dt. So small time will be dt. So dt ds but dt which is equal to velocity in the short distance displacement. So I can write v which is equal to ds divided by dt. So again I will write v divided by 1. I can write, if I will divide uh, v by 1, so I will get same v. So here I will do cross multiplication from dt into v, and again I write here 1 into ds. So this concept I will use, that is the cross multiplication. So here I write v into dt, which is equal to 1 into ds. 1 into ds. Now I will say, if any object that is moving at time t is equal to 0, in that case I will say that object will have displacement 0, because time is 0, so displacement will be 0, but time will be t, so displacement will be s. So that concept, that limit I will use here. So I will write, I will integrate here, I will write one integration method. So before writing integration method, when I will write one statement, when t is equal to 0, in this case this displacement will be 0. This PLACEMENT displacement will be 0. Here I will write displacement will be also 0, but time will be t. Here I will say when time will be t, time will be t. In this case I will say displacement will be s. So this place PLACEMENT displacement will be s. Here I will say displacement will be s, and then I will write one information, that is integration method, and then integrating on both sides with respect to t, and also with respect to s
with corresponding sides we get. So one statement that with that information I will then integrated on both sides. Integrating on both sides, on both sides, and then we get. So this is the positive informations, and each and every student, this information student has to know when t is equal to 0. In this case, displacement will be 0 because time is 0, so displacement will be 0. But time is going to 2t, so displacement will be s. So in this case, I will integrate. So I will put here integration sign. So this term I will integrate with t is equal to 0 to t. But here s is a value, so the s represent displacement. So initial velocity will be 0, and final and initial displacement will be 0, and final displacement will be s. So this concept I have to use properly for getting its value. Okay, student, when time is 0, so displacement will be 0. When time is t, so displacement will be s. Okay, so I will use the concept of integration method, and then I will integrate it, and after integrating I will get its value positively. Okay, student, so you concentrate on this topic. So after completing it, and then I will terminate communication with you positively. Okay, student. So this information, first of all, I will explain in Hindi, and then I will erase this information which is not necessary now, and then I will solve या resolve this information to reach to the destination. Okay, so यहाँ पर लिखा गया है the equation of मोशन, द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, एक गति का दूसरा समीकरण है। इसको प्रूव करने के लिए हम जानते हैं वेग जो होता है डिस्प्लेसमेंट बटे टाइम होता है। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी वस्तु ए से बी तक मूव करता है तो हमारा डिस्प्लेसमेंट जो होता है ए से बी होता है, लेकिन हम इसमें एक छोटा डिस्टेंस को कंसीडर करते हैं। तो छोटे को डिफरेंस करते हैं, ये डिस्टेंस होता है जिसको डेल्टा के नाम से जानेंगे, या डेल्टा को डी को लिखेंगे, डी एस बटे डी टी होगा। तो इस डी एस बटे डी टी में जो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, दोनों का वैल्यू सेम होगा, इसलिए हम लिमिट डेल्टा टी टाइम्स टू 0 लिखेंगे, और इस डेल्टा टी टाइम्स टू 0 डी एस बटे डी टी को स्मॉल डी टी डी एस बटे डी टी लिखेंगे। अब इसको जो होता है यहाँ पर भी है तो भी लिख दिए, यहाँ पर डी एस बटे डी टी है तो इसको डी एस बटे डी टी लिख दिए, भी को भी बटे 1 लिख सकते हैं। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको तिर्यक हिंदी में तिर्यक गुणा के नाम से जानते हैं। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो हमें ये टर्म मिलेगा। लेकिन हम कह रहे हैं कि जब समय का मान 0 होता है उस केस में विस्थापन 0 होगा, और जब समय का मान t होता है तो उस केस में विस्थापन यस होगा। इसलिए यहाँ पर जो फंक्शन है t के रिस्पेक्ट में है, तो यहाँ पर लोअर लिमिट का वैल्यू होगा वो 0 होगा और अपर लिमिट का वैल्यू t होगा। उसी तरीके से यहाँ पर जो होता है विस्थापन है, जब समय 0 होता है उस केस में विस्थापन 0 होता है, जब समय t होता है तो उस केस में विस्थापन यस होता है। अब इसमें जो होता है इंटीग्रेशन समाकलन विधि को यूज करेंगे, और उस विधि को यूज करके इसके वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, मीन्स उसके मान को परिकलन करेंगे। ओके, तो इसको पॉजिटिवली जो होता है, जो इस समय रिक्वायरमेंट डाटा नहीं है उसको यूज करेंगे और पॉजिटिवली इसको सॉल्व करेंगे। ये 1 2 3 दीज इंफॉर्मेशन है, इस इंफॉर्मेशन को जो होता है पॉजिटिवली आप माइंड में स्टोर करेंगे। ओके, तो एबव डेटा को हम इरेज करेंगे फॉर फर्दर कैलकुलेशन। तो यहाँ पर भी जो होता है कांस्टेंट होता है, भी का वैल्यू हम गति का पहला समीकरण जानते हैं कि v इज इक्वल टू होता है u प्लस ए टी। एक गति का पहला समीकरण होता है ईच एंड एवरी स्टूडेंट्स आर नोइंग वेरी वेल। तो v की जगह पर हम u प्लस ए टी को सब्स्टिट्यूट करेंगे। यहाँ पर
टी का जो डोमेन होता है 0 से टी तक होगा, और यहाँ पे भी की जगह पर यू प्लस ए टी हम यहाँ पे लिखेंगे, और इसको इंटीग्रेट करेंगे, डिफरेंस अवकलन करेंगे टी के रिस्पेक्ट में, समाकलन करेंगे टी के रिस्पेक्ट में, और राइट हैंड साइड में यस है, इसको लिखेंगे 0 से यस 1 को हम डी एस के रिस्पेक्ट में समाकलन करेंगे। ओके, अब गिवन जो डेटा है उस डेटा को पॉजिटिवली इरेज कर रहे हैं। अब एक कंसेप्ट और यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। अगर हमारे पास दो फंक्शन है, f1 ऑफ x प्लस f2 ऑफ x, और इस दोनों फंक्शन को जो होता है अगर हम x के रिस्पेक्ट में अगर इंटीग्रेट करते हैं, समाकलन करते हैं, तो इसको अलग अलग पदों में हमको समाकलन करना होता है। तो f1 x dx के रिस्पेक्ट में, उसके बाद से दूसरा f ऑफ 2x f ऑफ 2x को dx के रिस्पेक्ट में हम समाकलन करेंगे। इसका मीनिंग यह हो गया, अगर दो फंक्शन का एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, तो उसको हम इस तरीके से अलग अलग करके उसका समाकलन करेंगे। तो यहाँ पर उसी कंसेप्ट को यूज करेंगे। यहाँ पे u एक फंक्शन है, तो u इंटू डी टी, इसको हम समाकलन करेंगे 0 से t तक। उसके बाद से यहाँ पर प्लस साइन है, तो प्लस साइन रखेंगे। यहाँ पर 0 है, यहाँ पर t है तो t, और यहाँ पर a इंटू टी है इंटू डी टी है, इसको यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद से हम जानते हैं 1 का x के रिस्पेक्ट में समाकलन करते हैं, तो 1 का t के रिस्पेक्ट में समाकलन के t प्लस c हुआ, यहाँ s के रिस्पेक्ट में समाकलन करेंगे तो s प्लस c होगा, और इसका लोअर लिमिट 0 होगा, अपर लिमिट s होगा। ओके, अब यहाँ पर ऑलरेडी u जो होता है कांस्टेंट है, u को हम लिख सकते हैं समाकलन 0 से t, और u को लिख सकते हैं u गुणे 1 इंटू डी टी। उसी तरीके से यहाँ पर एक कांस्टेंट है, इसका भी समाकलन करेंगे 0 से t तक, एक को हम लिख सकते हैं a इंटू टी इंटू डी टी, और इसका अपर लिमिट रखेंगे तो s प्लस c हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस साइन रखते हैं जब लोअर लिमिट रखते हैं, x की जगह पर 0 रखेंगे और c की जगह पर c। ओके, इसको इतना हम रिप्रेजेंट करेंगे। ओके स्टूडेंट, अगर इसको आप पॉजिटिवली समझ रहे हैं तो हम नेक्स्ट स्टेप को भी हम लिखेंगे। उसके बाद से ये सभी इंफॉर्मेशन को हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। जो स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं या सीबीएसई बोर्ड में पढ़ते हैं, वो सभी स्टूडेंट इजीली इसको अंडरस्टैंड कर लेंगे। ओके, सो हम इसको, ये कांस्टेंट है, यू कांस्टेंट है, जिससे यहाँ पर 5 और 5 कांस्टेंट था, 5 को बाहर लिए, उसी तरीके से यहाँ पर यू को हम बाहर लेंगे आउटसाइड, और इसको 0 से t तक इंटीग्रेट करेंगे। यहाँ पर 1 हो जाएगा 1 इंटू डी टी। उसी तरीके से यहाँ पे एक कांस्टेंट है, ए को बाहर लिए और इसको इंटीग्रेट 0 से t किए, और यहाँ पर t है और इसको डी टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। यहाँ पे जब सिंप्लीफाई करेंगे एस प्लस सी होगा, और यहाँ पर माइनस सी होगा, ये माइनस सी और प्लस सी कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में एस बचेगा। ओके, और लेफ्ट हैंड साइड का भी हम इंटीग्रेट करेंगे और अपर लिमिट और लोअर लिमिट को सब्स्टिट्यूट करेंगे। ओके स्टूडेंट, सो आई होप दैट in student who are reading in Hindi medium, that in English medium, those are also understanding the information in detail. Here, left hand side that I have written u plus 80 in the place of v. I know that first equation of motion is v is equal to u plus 80. So that value I have written u plus 80 here in the place of v. And right hand side 1 is available, so integration of 1 is yes plus c, because here variable is available in the form of yes, so yes plus c, because here available in the form of t, so t plus c, so here is available yes, so yes plus c. Okay, now next term I have written here right value of upper limit and also lower limit.
and then after simplify I have got in the right hand side value yes. Similarly here I have explained here if two functions are available in form of addition or subtraction, if I will put here minus sign, so here will be also minus sign. So separate integration will be there. So here dt is multiplied with u and then I have integrated from 0 to t, and again at into dt that is also integrated from 0 to t. Okay, here I am looking u is not available in the form of t, so you will be constant. So I will take it outside with the help of this concept. Okay, so you will be outside. So here will be 1 into dt, and similarly here will be outside. Here t into dt will be available. Okay, so I hope that you are understanding these informations in detail. Now here one integration concept is also available. That concept I will explain here, and then I will reach to the destination positively. So if integration of t, here I have to write integration of t with respect to t. I will put there t because t has power 1. T has power 1, so I will put there t plus 1 because here I am doing integration one time, so 1 plus 1 that will be 2, and when I will integrate, so I will add 1 constant value. So integration of t into dt, that will be t to the power 1 plus 1, 1 plus 1 divided by 1 plus 1, that will be 2. I will divide with 2. So that concept I will use here. Okay. So above data I am going to erase, and after erasing below data I will write there. So here I have written here in the place of u I will put here u and 1 into dt, that will be t plus c, but its lower limit has value 0 to t, and again I will write a, and in the place of t into dt I will write here t square with 2 plus c. So here will be t square by 2 plus c, and its lower limit is 0 and upper limit is t, and on the right hand side I have got value s. Okay student, now further I am going to resolve the above question. So here I will put u and upper limit, value of upper limit I will put, that will be t plus c, and then here I will put minus sign, and then here I will put 0 in the place of t, that will be 0 plus c. Okay, I will write these informations in curly bracket, and again here I will put a, and then upper value I will put, so that will be t square divided by 2 plus c. This will be in small bracket, and then I will put 0 lower value, that will be 0 square divided by 2 plus c, that will be also in bracket. Okay, and right hand side value I will put there as right hand side value is available yes. So again I will say, so u, and in the curly bracket I will change bracket, so t plus c, here will be minus c. Again I will say a, and I will write t square by 2 plus c minus c, and then I will put there yes. So c and c will be cancelled out. After cancelling I will write u into t plus, here I will write 1 by 2 a t square, which is equal to yes. This is the second equation of motion I have proved
with the help of integration method. So I hope that you are knowing very well this concept. Okay. Now these informations I am also going to tell you in Hindi, so students who are reading in Hindi medium, that is in UP board, those students can also understand easily. And this is the concept of class 11th physics and also class 9th physics. Okay. So here I am going to explain. जब कहा गया था कि फर्स्ट टर्म जो होता है 0 से t तक इंटीग्रेट करते हैं तो फंक्शन t के रिस्पेक्ट में था तो t प्लस c हुआ, लेकिन यहाँ पर हम जानते हैं t इंटू डी टी है, t के रिस्पेक्ट में यहाँ पर t फंक्शन है, तो इसका इंटीग्रेशन जो पावर होता है उसमें एक ऐड हो जाता है, दोनों को जोड़ के नीचे डिवाइड कर देते हैं और एक बार इंटीग्रेशन करते हैं तो एक कांस्टेंट को ऐड करते हैं। उसी कंसेप्ट को यूज करके यहाँ पर लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट t को रखे हैं और इसका लोअर लिमिट के वैल्यू को हमने सब्स्टिट्यूट किया, यहाँ माइनस साइन अपने से सब्स्टिट्यूट करते हैं और राइट हैंड साइड में ये डेटा होगा। उसी तरीके से यहाँ पे ये रखे और अपर लिमिट के वैल्यू को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट किए, यहाँ पर माइनस साइन किए और लोअर लिमिट के वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करने के बाद जब सिंप्लीफाई किए तो कॉन्स्टेंट टर्म कट गया है, लेफ्ट हैंड साइड में यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और राइट हैंड साइड में यस मिला। इसको सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं ऐसे कर सभी राइट हैंड साइड डेटा को लेफ्ट में करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड के सभी डेटा को राइट में करेंगे, तो इस तरीके से एस इज इक्वल टू यू इंटू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होगा, ए टी स्क्वायर होगा। इस तरीके से एक ब्रैकेट का दूसरा समीकरण हुआ, इसको कहेंगे एक सिद्धम, सिद्धम, एक सिद्धम, इसको हम एक सिद्धम के नाम से कहेंगे या हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड, इसलिए सिद्ध हुआ। तो इस वीडियो में इस सॉल्यूशन में जो भी पॉइंट आपको अच्छा लगा हो उस पॉइंट को पॉजिटिवली कमेंट करें, उस पॉइंट को पॉजिटिवली लाइक करें, शेयर करें अपने कलीग्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ और स्टूडेंटों के साथ, ताकि उनका भी नॉलेज अपडेट और डेवलप हो सके। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और चैनल नेम जो होता है राना सर यूपी कुशीनगर है। इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद, राना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।